Yes. Good morning, children. Welcome to the English class. Today we will study chapter number 5 of English Reader. The name of this chapter is There Will Come Soft Wings. So this is a poem and this poem is written by Sarah Tisdale. ये poem किसके द्वारा लिखी गई थी? Sarah Tisdale के द्वारा लिखी गई थी. So now this is poem about this is poem to teach you a very good lesson, a lesson for a lifetime that you always remember. Okay. So before starting this poem, I want to ask you, yes student, just imagine what your life before the lockdown and during the lockdown and due to lockdown. अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है. So now who is suffering? कौन सफर कर रहे हैं? We the human are suffering and animals and birds are suffering, but they might be suffering because shortage of food, but majorly they are enjoying. Now children, you might be seeing a variety of birds have been seen in the environment. Why it is happening? Because these things are in process. ये सब चीजें क्या रहती है? प्रोसेस में रहती है. देखिए कोई भी वॉर हो जाता है या कोई अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो नेचर की जो थिंग्स है वो क्या करती है? कंटिन्यूस अपनी प्रोसेस में चलती रहती है. No matter how much human will destroy the earth, these things never stop. Trees will forever grow, the birds will come, and you will see the spring season, and these things are constant. Okay, these things will be placed on the regular basis. No matter even the mankind will perish means it will gradually end and it will gradually kill or over. Okay, the poet has told the same thing that even after several war has taken place. So now in this poem we learn that there are the different several wars have taken place, and the lockdown even lockdown condition has taken place, even of the worst condition take place. So few things that will be continuous. So the title of this poem explain these things. There will come soft rain. जो आपकी जो इसका जो टाइटल है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि there will come soft rain. So let's start our poem. The poem talks of how mankind would perish an account of war, but the natural cycles continue forever. इस पोयम में किसके बारे में बात करी गई है? इस पोयम में ये बात करी गई है कि किसी भी अकाउंट ऑफ वॉर की वजह से ये जो हमारा जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसकी वजह से या कोई भी मैनकाइंड क्या हो रहा है? पेरिश हो रहा है, मतलब डाइड हो रहा है. बट लेकिन क्या हो रहा है? नेचुरल साइकिल्स कंटिन्यू फॉर एवर. जो नेचुरल साइकिल्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि नेचुरल साइकिल्स किसके बारे में बात करी है कि जैसे हम बर्ड की बात करते हैं, हम ट्रीज की बात करते हैं, हम स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, वो क्या रहता है? कंटिन्यूस चलता रहता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड swallows circling with their shimmering sound. So now the student, the poet is saying, even if the mankind will be destroyed, there is going to be rain, and rain is a natural process. Rain क्या है? एक natural process है. So will not stop of anything. Because of that rain, sand will be get. इस rain की वजह से क्या हो जाती है? Sand क्या हो जाती है? Get wet. And did you now student, did you feel that the smell of sand when water drops put on it? So the first line means that there will be rains, there will be rains and sand will be wet and we feel the smell of the ground. जब भी rain होती है, जो rains की जो drops होती हैं वो अगर आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी के ऊपर सैंड के ऊपर गिरेंगी, जो उसकी जो स्मेल होती है, आपने कभी स्मेल करी है उसकी? वो जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल अच्छी चीज स्मेलिंग होती है. नाउ यू फील द स्मेल ऑफ द ग्राउंड. जो स्मेल होती है कि आपने उसको कभी फील किया? आफ्टर दैट इन द सेकंड लाइन, एंड swallows circling with their shimmering sandals. swallows किसकी बात करी गई है? बर्ड्स की बात करी गई है. So there are few birds who move on circling in the sky because that produce a kind of sound. Here shimmering means क्या होता है? Shimmering means shining with a soft light. Okay.
तो जो भी बर्ड्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, स्काई में क्या कर रहे हैं, सर्कलिंग साउंड, सर्कलिंग मोशन में है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो द स्टूडेंट दीज टू थिंग्स विल बी कंटिन्यूस, ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है. इवन इफ देयर इज अ लॉकडाउन, इवन इफ अ वॉर. ओके, नाउ टू थिंग्स, व्हाट इज द टू थिंग्स, द सॉफ्ट रेन एंड सेकंड इज बर्ड विल बी मूविंग, they will be making some sound. Okay student, I hope you have understood the first two lines. Now I'm starting in next lines. And frogs in the pools singing at night, and wild plums tree in tremulous white. अब हम बात करते हैं, या नाउ स्टूडेंट यू मस्ट हैव सीन द फ्रॉग, आपने फ्रॉग देखे होंगे, यू नो मेकिंग सम वियर्ड काइंड ऑफ नॉइज इन नाइट. आपने देखा कि जो फ्रॉग होते हैं सम वियर्ड काइंड की नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. सो दे विल डूइंग कंटिन्यूअस सोइंग, कंटिन्यूस नॉइज वो प्रोड्यूस करते ही रहते हैं. सो नाउ दीज प्लम ट्रीज विल आल्सो एग्जिस्ट इवन इन द वॉर. आपकी जो हम बात कर रहे हैं अभी वॉर की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड की हम जब हम बात कर रहे हैं कि जो प्लम ट्रीज हैं विल आल्सो एग्जिस्ट इवन इन वॉर टेक प्लेस. यस, दिस ट्रेमलेस मींस क्या होता है, ट्रेमलेस मीन ट्रम्बलिंग. ट्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट होना या कांपना. जो ट्री होते हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, ग्रो हो रहे हैं, और वो खड़े खड़े क्या करते हैं, वाइब्रेट भी हो रहे हैं, हिल भी रहे हैं. सो क्या ये जो नेचर है, हमने अभी अपने किसकी रेन की बात करी, हमने बर्ड्स की बात करी, अब हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं और ट्री की बात कर रहे हैं, कि ये जो नेचुरल जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस जो चल रही है, क्या वो जो प्रोसेस है, क्या वो किसी के लॉकडाउन की वजह से, किसी वॉर की वजह से क्या ये प्रोसेस रुक रही है, नहीं. दे विल कंटिन्यूअस, वो क्या चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है. ओके. So now in these two lines, the poet is saying that ये कह रहा है कि frogs in the pool singing at night. जो frogs है वो क्या आपने देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, रात के समय they produce a weird kind of noise and they singing at night, and the wild plum trees in tremulous white, and these trees are in trembling. Okay, so now I'm starting our next line. Robins will wear their feathery wire, whistling their wings on a low fence wire. Now the student here, the robins means आपको पता है कि robins क्या है, एक bird है ना. robins क्या है, एक bird है. will wear their feathery wire. So now the robins is a bird which is actually having orange kind of feather and wings. Okay, so the orange color is similar to that fire. जो orange color है वो किससे similar किया गया है, fire से similar किया गया है. Now here the contrast, यहाँ पे contrast है. The poet is saying, see, there is an orange color which looks so good to us when we see the bird. Okay, when we see the orange color in fire. Okay, when we see the orange color in fire, it pains to our eyes. It is comparison that is being done. यहाँ पर क्या किया गया, comparison किया गया है. एक robin के feather head look like orange color and fire color is also orange. There is a contrast here. So when we see the orange color of the robin's feather, it give us and it looks so good, and when we see the same similar orange color in fire, and it pains to our eyes. So there is a comparison that is being done. So now after that, whistling their wings on a low fence wire. Now the student, and whistling their wings, here the wings means kya hai, urges, wings a sudden idea or desire to do something. Okay, now the robins की बात हो रही है. You must be wondering that the bird sit on a tree and a low fence wire. Now you can see the image of this poem. There are the low fence wire and the robin sit on the wire, fence wire. And they produce some sound. Okay, so again the poet highlighting the poem, look at the bird and look at the robin. आप robin को देखिए, इस bird को देखिए. Now again contrast in this line, to produce some kind of sound that usually bird produce, and where they sitting, and they sitting low fence wire. Okay, now you must be seen in movies the current flow some kinds of fire people make to protect them to the enemy. So the same kind of fans are used to men protect themselves. The same kind की जो fans fire हो जाती है, जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को protect करने के लिए use करते हैं. How again, कैसे? Again the poet highlight this poem, look at the bird and look at the man. The robin enjoy his
orange wings and the same time women are covering themselves covering wire. women ने अपने आप को किससे हाइड कर रखा है, covering wire से क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है. So student, I hope you have to understood the two lines. Now I'm starting again. The robins will wear their feathery wire whistling their wings on a low fence wire. ओके स्टूडेंट, ना रोबिन्स क्या है, एक बर्ड है जिसने क्या कर रखा है, जो उसके जो फेदर है वो ऑरेंज कलर के हैं और जो फायर कलर भी है ऑरेंज कलर का. उसमें क्या कंट्रास्ट दिया हुआ है कि कंट्रास्ट करा कि जो उसके जो फेदरी कलर फेदर्स हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन फायर जो हमको क्या करती है, पेन देती है. एट द सिमिलर टाइम जो रोबिन्स होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस some kinds of sounds, and they usually these produce and they sitting on the fence wire and now must be wondering the birds on a tree. Now, and not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Ab is in the two lines the poet saying how much you fight, how much you create problem on the earth. These birds and these animals are not going to pay attention, okay, at all. They will keep singing, they will keep dancing, they will not give attention to the person. इस लाइन में हमको ये बता रखा है कि कोई भी वार हो जाएगी, उनको वार का मतलब, उनको उसको वार से कोई मतलब नहीं है. नो वन विल केयर एट लास्ट, उनको कोई बात नहीं पता उसके बारे में. व्हाट इट इज, व्हेन इट इज डन, ये क्या हो गया है. Okay, so they keep wandering here and there. Okay, so they are not going to pay attention at all. They will keep singing, they will keep dancing, they will give attention to the, they will keep give attention, they will not give attention to the person. Okay student, now not one would mind, neither birds nor tree, if mankind perished utterly. Okay, so in this lines, the poet is saying, he giving the message to the human that you think because of war, birds, animal, and tree will care. Will care? No. This is a normal and continuous process. If the mankind is end, now even the birds, not even the tree, pay attention to the wet mankind. अगर mankind here the perish means क्या होता है, died होना. They end, they gradually end. Okay, धीरे धीरे क्या हो गए, वो खत्म हो रहे हैं. लेकिन जो हमकी जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर है, जैसे बर्ड की बात करते हैं, हम ट्री की बात करते हैं, उनको नहीं पता. They do not think, they do not know about the human war, they do not know about the as a lockdown period. उनको नहीं पता कि धीरे धीरे मनुष्य क्या और जो मैनकाइंड है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है. But their process are continuous. There is a normal and continuous process. Even the mankind is end. Okay, student. Now, in the next line, and spring herself when she woke at dawn would scarcely know that we were born. Here in this line, next time spring will again come and spring will have has no idea we human are not longer existence. Okay, the spring has no idea the human being destroy themselves on the earth. spring को कोई भी आइडिया नहीं है, क्या आइडिया नहीं है कि जो इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पेरिश हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. उसको कोई भी आइडिया नहीं है. ओके, तो क्या होता है जो नेचर की जो प्रोसेस है, स्प्रिंग चला गया, वापस से स्प्रिंग क्या हो रहा है, वापस से व्हेन शी वॉक एट डाउन, वापस से वो सुबह स्प्रिंग वापस आ रही है, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग के डिस्ट्रॉय के बारे में नहीं पता. सो नाउ द स्टूडेंट, दिस पोएम इज शॉर्ट. नाउ द पोएट गिव मैसेज व्हाटएवर वुमेन on the earth, there are a few great problems which are not going to affect it at all, because they are going to be continuous. They have seen. Now, student, you have seen frog, you have seen plum trees, now you have seen robin, and you have seen spring season. Everything is going to come again without be affected. Okay, student, I hope you have to understood the short poem. Okay, please read it 2 or 3 times. Okay, student.